So let us do a few questions, and okay. Then we are going to look at the next method of preparations. Just give me a second. I need to re-share my screen. Write the major products for following. Draw the products and send the answer on my WhatsApp.
Yes. Diana, very good. All the answers are correct. Question waiting for your answers. Just one. Correct, very good. Now, we'll look at the second method of preparation, and that is for ketones only. Yeah, by the way, let me just write these. So both first and the third reaction are going to give you benzaldehyde, which is going to give you 1, 2, 3, 4 carbon atoms, and CHO. Here also you will get benzaldehyde. ठीक है? D में लिखिएगा. Method of preparation of ketones only. From these methods, from these method of preparation, we are going to get only ketones, huh? Not aldehydes. पहले था सिर्फ aldehyde. Next is only ketones. So, for example, you have first one is from acyl chloride. Right, number one from acyl chlorides. What happened here? आप इसको एक बार देख लीजिए, and then we are going to look into some questions. So you have acyl chloride, that is R, C double bond O, Cl. It is reacted with dialkyl cadmium. Dialkyl, you will have some R group. Di का मतलब दो होगा यहाँ पे. I'm putting R dash because this R and this R may be different. So there are two alkyl groups attached with cadmium. Dialkyl cadmium. And basically what's going to happen? This Cl will be replaced by one of these R dash. R, C double bond O will be as it is. And then the R dash will come here. Okay? Plus you will get CdCl2. That means both of the alkyl groups that is attached with cadmium, it is being replaced by chlorine. Okay? If you want to balance it, you will get 2RCOCl, and here also you are going to get two products like this. Okay? For example, if you have CH3COCl plus CH3 whole twice cadmium, then what you are going to get? CH3, C double bond O will be as it is. The chlorine will be replaced by the alkyl group. What is the alkyl group? Methyl group, CH3. CdCl2, you don't need to write. Let's suppose you have something like this, plus C2H5 whole, C2H5 whole plus. ठीक है, C2H5 ले लेते हैं, CH3 ले लेते हैं, CH3 whole twice and cadmium. What will happen? Till the C double bond O, everything will be as it is. And what is the alkyl group? Methyl. एक यहाँ पे CH3 था. ठीक है, आप ये वाला करके बताइए जरा.
ठीक है, हाँ, वेरी गुड। करेक्ट है हर्षा। जाइना वेटिंग फॉर यू। बहुत ज्यादा आप लोग ना, या जाइना, डोंट ओवर थिंक अबाउट इट। राइट एवरीथिंग एज इट इज टिल द सीओ, सी डबल बॉन्ड ओ तक पैसे लिख दीजिए। आइडेंटिफाई व्हाट इज द अल्काइल ग्रुप इन द कैडमियम पार्ट। तो C2H5 है वहां पे, इथाइल होगा। ठीक है, ट्राई कीजिए, हो जाएगा। बट यू नीड टू लाइक मूव योर पेन। वेरी गुड, करेक्ट है। ठीक है, सही। Nothing wrong there. So 1 2 3 4 and here you will have C double bond O। तो यहाँ पे C2H5, C2H5 क्या होगा, CH2, उसके बाद फिर CH3, है ना। अगर एक्सपैंड करके लिखेंगे, बट सिंस Zaina you have written like this, that is also completely fine। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, C2H5, दिस इज ऑल्सो completely fine, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। नो। Next thing that is very important is the preparation of dialkyl cadmium। How are we going to prepare dialkyl cadmium? Preparation of dialkyl cadmium। So basically dialkyl cadmium is prepared by Grignard reagent। तो आपके पास मान लीजिए समथिंग R डैश MgBr है, प्लस you have CdCl2 in the presence of dry ether, this chlorine, ये क्लोरीन किसके पास चल जाएगा, Mg के पास, और ये alkyl रिप्लेस हो जाएगा, and you will get R dash whole twice cadmium plus MgBrCl। ठीक है। For example, if you have CH3, by the way, if I have not balanced this, है ना, ये इसको बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ पे 2 वगैरह आ जाएगा। ठीक है, CH3 MgBr plus CdCl2 in the presence of dry ether, CH3 whole twice मिलेगा आपको, कैडमियम, अच्छा प्लस उसको छोड़ दीजिए जो भी मिलने वाला है। ठीक है। नाउ समटाइम्स व्हाट कैन हैपन ना, ध्यान दीजिएगा जरा, इफ यू आर राइटिंग प्लीज स्टॉप राइटिंग। समटाइम्स व्हाट विल हैपन, they will give you questions like this, that you have MgBr, a Grignard reagent, and in the first step, please don't write, है ना, ध्यान से सिर्फ अभी देखिए, लिखेगा मत प्लीज। In the first step, what they are doing, they're adding CdCl2, and in the second step, they are adding acyl chloride। ठीक है। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि असाइल क्लोराइड, सी द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड कैडमियम क्लोराइड, it is going to give you dialkyl cadmium। Dialkyl cadmium, when it reacts with acyl chloride, it's going to give you ketone। Now that ketone is going to have all of this portion, COCl वाला। इसको अगर हम कुछ अलग अलग से कर देते हैं, let's suppose it's red, so you will have something like this, 1 2 3 C double bond O as it is। The rest of the ketone part, the next alkyl group will be coming from the dialkyl cadmium। Dialkyl cadmium तो नहीं है, but dialkyl cadmium gets its alkyl from the Grignard reagent, and that Grignard reagent has 1 carbon and 2 carbon। यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 2 carbon, so this will be from the Grignard reagent, these 2 carbons will be from the Grignard reagent। ठीक है। तो ये जो आपके पास पोर्शन है, this portion, this is coming from acyl chloride। This portion, it is coming from Grignard reagent via dialkyl cadmium। cadmium। Make sense, Zaina and Harsha? ये समझ में आया? हर्षा, व्हाट अबाउट यू?
Yes, sir. ठीक है, कॉपी कर लीजिए सुधा. Let me know once you're done. फ्रॉम लिख लीजिएगा ना, तो लगेगा फ्रॉम लिख लीजिएगा, फ्रॉम सेल्फ. Design is done. Just waiting for Harsha now. Second method of preparation लिखेगा. Of ketones only. From nitriles using Grignard reagent. From nitriles using Grignard reagent. आसान सा रिएक्शन है, इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा आप, ठीक है ना. प्लीज ट्राई टू सी. You have Grignard reagent, that is R MgBr plus suppose some R dash alkyl group connected to carbon triple bond nitrogen. ठीक है. So what is going to happen? This alkyl group which is attached with magnesium, it will be having delta negative charge because magnesium is a metal, it has tendency to lose electron. So carbon ज़्यादा electronegative है, carbon will pull the electron density and get negative charge here. But the carbon which is in the nitrile, it is attached with nitrogen atom, and nitrogen atom is going to be highly electronegative. That is why it is going to pull the electron density from carbon atom, making this carbon atom delta positive. What will happen? There will be attack from this alkyl onto this carbon from negative to positive, higher electron density to lower electron density, and you will get something like this. So addition reaction यहाँ पे होगा. This R, it will attach on this carbon atom like this, R dash as it is, this carbon atom as it is. This R group of the Grignard reagent is attached like this. Double bond will be broken. Sorry, triple bond will be broken to double bond nitrogen, and this nitrogen will be having MgBr with it. Now after this, what's going to happen? You just hydrolyze it. In the presence of H plus and H2O, you will get R dash C double bond O R. This bond is going to get broken. ठीक है. यहाँ पे आपके पास इस कार्बन आटम को तो O मिल जाएगा, एंड नाइट्रोजन आटम को मिल जाएगा दो हाइड्रोजन NH3 प्लस यू विल गेट MgBr OH. So that's it. That's the reaction. ज़्यादा कुछ इसमें नहीं. कॉपी कीजिए थोड़ा, then we will do some examples. ठीक है, let's see. CH3 C triple bond N, और आपको दिया हुआ नंबर 1 स्टेप में इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. सेकंड स्टेप में आपको दिया हुआ है H3O पॉजिटिव. सो व्हाट यू विल डू, फ्रॉम द नाइट्राइल आपको क्या करना है, CH3 carbon, and the nitrile carbon will get double bond O.
तो ट्रिपल बॉन्ड एन है वो डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, एंड देन दी एल्काइल ग्रुप, जो नेक्स्ट एल्काइल ग्रुप है दैट विल बी फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रीजन, दैट इज 2 एल्काइल ग्रुप, C2H5 यहाँ पे आ जाएगा लाइक दिस। बात समझ में आ रही है? हाँ ना? टेल मी गाइस। यस सर। CH3 MgBr, सेकंड स्टेप में वही H3O पॉजिटिव। तो टिल CN, 3 कार्बन आटम आपके पास रहेंगे फ्रॉम द नाइट्राइल, यू गेट अ डबल बॉन्ड, and the alkyl group will be coming from Grignard region, and the alkyl group in the Grignard region is CH3. You can even make acetophenone from here, or हाँ acetophenone ही बन जाएगा. For example, if you have CH3 CN plus I have phenyl magnesium bromide MgBr, और उसके बाद वो आपके पास वाटर एंड H प्लस है. सो दिस CH3 C डबल बॉन्ड O हो जाएगा ये, और फिर वापस यहाँ पे क्या रहेगा, बेंजीन रहेगा. दिस गोइंग टू बी acetophenone. Copy this down, raise your hand once you're done. Please try to redo all of these questions like after the class, ठीक है? While you are revising ना, इसको प्लीज पढ़िएगा मत. इवन दो आप देख देख के भी कॉपी करें ना, still do that, ठीक है? तभी रिएक्शंस याद हो पाएंगे, and you will be getting more comfortable with the reactions. Is everyone done? Kanisha is done. Zaina waiting for you. अब यहाँ से ना काफी सारे सवाल बन जाते हैं कन्वर्जन के, ठीक है? सो क्वाइट वियर्ड आल्सो, बट लेट अस सपोज आपको यहाँ पे बोला गया हाउ विल यू कन्वर्ट मिथेनॉल टू एसिटोफेनॉल, ठीक है? मिथेनॉल टू एसिटोफेनॉल. मिथेनॉल क्या होगा? CH3OH. सी आपको कहाँ तक जाना है? एसिटोफेनॉल में क्या होगा? यू विल हैव बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O एंड CH3. तो बस ये CH3 अभी आपके पास है फिलहाल, तो यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स राइट नाउ. सारी चीजें हम लोग को धीरे धीरे ऐड करनी पड़ेगी. लेट अस सी कैसे करेंगे. सबसे पहले नो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स है ना, ये ऐसा मतलब रटने वाली चीज नहीं है. राइट नाउ इट सीम लाइक ओके फाइन आई हैव टू मेमोराइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इट्स नॉट लाइक दैट. यू प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप इसी को प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर आपका दिमाग खुलेगा दूसरे नए सवालों के लिए, ठीक है? तो फ्रॉम CH3OH व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड SOCl2. दिस विल गिव मी CH3Cl. Then I will add here Mg, which is going to give me CH3MgCl, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग एक और ऐड करेंगे यहाँ पे क्या, KCl. That is going to give me CH3. No, wait. MgCl अभी हम लोग को जरूरत नहीं है यहाँ पे ना, Mg नहीं ऐड करेंगे, Cl के बाद सीधा Cn ऐड कर देते हैं, KC. So I will get Cn here, और फिर once I have got nitrile, nitrile में हम सीधा क्या डालेंगे, phenyl magnesium bromide, Grignard reagent, MgBr in the first step, second step में H3O positive, ठीक है?
अभी इसी तरह का सवाल आपसे ना कुछ ऐसे ही बोल सकता है। हाउ विल कन्वर्ट ब्रोमोबेंजीन टू एसिटोफेनॉल? वेरी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट सीक्वेंस अलग रहेगा। ब्रोमोबेंजीन से एसिटोफेनॉल तक जाना है, तो ब्रोमोबेंजीन विल बी पीएच बी आर कर देते हैं हम सीधा। ठीक है, आई विल ऐड हियर एमजी, इट इज गोइंग टू गिव मी पीएच एमजी बी आर। आई गॉट अ ग्रीनहार्ड रिएजेंट, इससे बस मुझे ऐड करना है CH3CN, एंड आई विल गेट पीएच सी डबल बॉन्ड ओ CH3। अच्छा, बाय द वे इन द सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप में H3O पॉजिटिव भी रहेगा, बट नहीं भी ऐड कीजिएगा H3O पॉजिटिव तब भी चलता है। ठीक है, कन्वर्जन में खास तौर से they just need the reagents. Copy this down, raise your hand once you're done. Waiting for Harsha. Right. Next, we will craft acylation of benzene. Third, we will craft acylation of benzene. ठीक है, it's a reaction that was also present in the 11th standard. Basically, benzene है आपके पास, इसमें you will add some acylating reagent, which will be C double bond OCl. This will be done in the presence of anhydrous AlCl3, और आपको क्या मिल जाएगा? एसिटोफेन। ठीक है, so we can use another couple of things instead of acyl chloride, और भी दूसरी चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन, तो 1 2 1 2 3 4 कार्बन। और even you can do something like this. Same reagent, और alkyl group or aryl group that can be attached to the acyl carbon atom.
Raise your hand once you're done. now. ठीक है. Next is C, that is method of preparation of both aldehyde and ketones. Both aldehydes and ketones. ठीक है. यहाँ पे number 1 from alcohols that we have already seen in the alcohol, phenol, and ether chart. From alcohols, just to remind you guys, the first method of preparation from alcohol is by oxidation. Now, if you remember this, it's no पीसल नहीं. एक ऑक्सीडेशन है और एक कॉपर वाला भी है. ठीक है ना, याद रखिएगा दोनों. 1 degree alcohol, that is R CH2OH, when it is treated with weak oxidizing agent, it's going to give you aldehyde RCH. When you have 2 degree alcohol, that is R CH R dash, and there is OH here. When it is treated with generally any oxidizing agent, but ये है कि vigorous condition नहीं हो, drastic condition नहीं हो, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली. ठीक है. तो सारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या मिल जाएगा आपको? आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर डैश. कंडीशन इज दैट वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, दोनों में वीक इज मोर, वीक इज बेटर. बट इवन इफ यू हैव स्ट्रांग बट यू डोंट हैव ड्रास्टिक कंडीशन, अगर कोल्ड कंडीशन है एंड इट इज नॉट हॉट, एसिडिक वगैरह नहीं है, बहुत ज्यादा अल्कलाइन मीडियम नहीं है, इट इज aqueous, then any oxidizing agent is going to give you ketone. ठीक है. तो हम कुछ सवाल यहाँ पे लिखेंगे. Because you have done this, you're free to flip the pages of your notebook. ठीक है. Fill in the blanks. WOA means weak oxidizing agent. हाँ, WOA means weak oxidizing agent, OA means oxidizing. आप यहाँ पे वीक ही वीक लिख लीजिए, लेकिन सारे में ही हो जाता है. आई थिंक ये चीज हमने वहां पे भी बताई. वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही लिख लीजिए, बिकॉज व्हेन यू हैव टू ऐड द रिएक्टेंट, यू ऑलवेज ऐड द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. और जब आपको दिया जाएगा तो स्ट्रॉन्ग में भी आप कीटोन बना के ही आइए. ठीक है. Because strongly generally if they give, they are not going to give you drastic condition. याद है ना आपको को हर्षा एंजाइम ना? कहते ना कभी कभी ऑक्सीडेशन आपको ऐसे दिया रहेगा ओ लिख के. ठीक है, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन हो. ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक.
Sir, these are from alcohol chapter. हाँ हाँ, अल्कोहल में मिल जाएगा आपको। तीन चीज है ना, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद हो अगर आपको तो। फ्री टू फ्लिप द पेजेस। वैसे भी अभी कौन सा टॉपिक मिलेगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, किधर मिलेगा? Chemical properties. यप करेक्ट। दूंगी तो आराम से मिल जाएगा। जायना, आपको समझ में आ रहा है क्या करना है जायना? Guys, tell me whatever you have done. Zaina and Harsha, tell me whatever you have done. I didn't get any. You did not get anything. No, sir. आपके पास नोटबुक है, आपके पास अल्कोहल चैप्टर्स का चैप्टर है कि नहीं है? Sir, I can't find it. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज चाहिए। और फर्स्ट वन एसिडिक नेचर होगा ना पहला तो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल कंपाउंड्स। जायना, व्हाट अबाउट यू? आपसे हुआ कुछ? Yes, sir. हुआ कुछ इसी तरह क्या हुआ? हर्षा, माइक ऑन करें आप, जायना आपको पूछा। जी हर्षा। Yes, sir. एसिडिक प्रॉपर्टीज है ना, उसके बाद और क्या क्या बताइए जरा। Um, दो दो टाइप के रिएक्शन है ना, एक लास्ट में होगा, एंड में होगा, ऑक्सीडेशन तो एंड में होगा, मतलब फिनॉल से पहले देखिए क्या है, फिनॉल से पहले फिनॉल का होगा ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल। उससे पहले क्या टॉपिक है? the reaction with carboxylic acid. रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड।
Yes, अच्छा, sir. ईस्टर बनने वाला। एंड उसके बाद सीधा फिनॉल। A reaction of acid chloride and acid anhydride. रिएक्शन ऑफ व्हाट? एसिड क्लोराइड एंड Acid anhydride. उसके बाद क्या है? फिनॉल से Reaction of पहले cleavage of फिनॉल से CO. पहले हाँ, क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड की तरफ जाइए उसके बाद, मतलब जस्ट बिफोर द फिनॉल। फिनॉल का है ना एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो एंड में होगा, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल एंड में होगा ना। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल से जस्ट पहले होगा आई थिंक। ठीक है, आप जरा ढूंढिए जाइना। सेकंड वाले में इन द रिएक्टेंट हाउ मेनी कार्बन एटम्स जाइना, कैन यू प्लीज टेल मी कौन? जाइना, 2 carbon atoms. सेकंड क्वेश्चन। एंड प्रोडक्ट में 3 carbon. तो यू गॉट द मिस्टेक। Yes. ठीक है, बाकी सब सही है। प्रश्न मिला आपको कि नहीं मिला? Okay, after that, I have हाँ हर्ष। method of preparation of ethers. I think I missed a class. वेरी गुड, वेरी गुड। फिर आप देखिए, लेकिन कैसे मिस कर दिया आपने, और फिर आपने क्यों नहीं की क्लासेस? ये कुछ नहीं है आपकी इसमें? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, एसिडिक डिहाइड्रेशन है? No, sir. वो नहीं, तो फिर ये तो इम्पोर्टेंट क्लासेस आपने मिस कर दी है। रिएक्शन विद हॉट कॉपर ये भी नहीं है। इसके बाद ही होगा आई थिंक फिनॉल का। कहाँ थे आप 26 मई को? I don't. यू डोंट नो? आप तो करो, ये है आपके पास ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। Sir, after cleavage of COH bonds, I only have MOP of ethers. सीधा यहाँ Yes, sir. 26 क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड, रिएक्शन विद एसिड, ये तो है शायद आपको, है ना? Yes, sir. ठीक है, सी OH बॉन्ड भी है आपके पास। ठीक है, तो आपने 3 क्लासेस नहीं लिखा है, 26 मई, 1 जून एंड 2 जून। कहाँ थे आप इतने दिन? नहीं, 2 जून में थे, 2 क्लासेस आपने की। यू हैव नॉट डन Yes. 26 मई एंड यू हैव नॉट डन 1 जून। लिख लीजिए नोटबुक में, पेयर कॉपी में लिख लीजिए बिल्कुल। वॉच 26 मई एंड 1 जून लेक्चर्स। 1 जून में भी इंपॉर्टेंट था काफी भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। व्हाइट आप, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपने किया है? पता नहीं, शायद हो सकता है, नहीं भी किया होगा। Sir, I think I had the unit test that time. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये यूनिट टेस्ट की वजह से आप लोग ने इतनी ज्यादा, मतलब क्या बताएं पर। देख लिया आपने 26 मई और 1 जून, ठीक है? Yes, sir. लेक्चर देख लीजिएगा अब आप, ठीक है? ठीक है, तो जब देखिएगा तो आपको फिर समझ में आ जाएंगी ये चीजें। CrO3, it is going to convert second 2 डिग्री अल्कोहल टू कीटोन। PCC 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा CH3 एज इट इज, और ये CHO हो जाएगा। ठीक है, 2 कार्बन एटम्स here, 2 कार्बन एटम्स here। ऑक्सीडेशन ऑफ अ 2 डिग्री अल्कोहल इज गोइंग टू गिव यू इस ब्रैकेट में O का मतलब ऑक्सीडेशन होता है। सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट 1 डिग्री अल्कोहल टू CHO वी कैन यूज व्हाट? PCC। एक और रिएजेंट होता है PDC, है ना, तो उसको भी लिख देते हैं ताकि थोड़ा याद रहे। इसके लिए आप कैन यूज CrO3। बाय द वे, इसके लिए भी यू कैन यूज आइदर PDC PCC वगैरह, है ना। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर। नेक्स्ट इज, एक नोट जरा थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोग को याद रहे। नोट इज यूसेज ऑफ strong oxidizing agent on 1 degree alcohol leads to formation of carboxylic acid. ठीक है, from alcohol only we have B case by catalytic dehydrogenation, by catalytic
Here also 1 degree alcohol, RCH2OH, in the presence of copper at 573 Kelvin is going to give you aldehyde RCHO. Plus it gives you dry hydrogen, H2 gas. If you have 2 degree alcohol, RCH, R dash, and here you have OH. Copper at 573 Kelvin is going to give you RC double bond O, R dash plus H2. Okay. Now, instead of 573 Kelvin, you can also write just heat, है ना? Delta sign भी आप शुरू कर सकते हैं यहाँ पे. एक नोट यहाँ पे बस ये लिख लीजिएगा. 3 degree alcohol gives alkene. And instead of copper, we can use Ag also. Ag can also be used. But copper is very cheap, that's why we generally tend to use copper. इसको लिख लीजिएगा. We have done the questions in alcohol chapter already for these. तो आप रिपीट कीजिएगा तो हो जाएगा. इसका मतलब ये है हर्षा, जो आपने अल्कोहल फिनॉल अल्कोहल चैप्टर के लिए जो आपने ये लिया था, फिर शीट लिया था, उसको भी आप प्रैक्टिस नहीं करना चालू किए होंगे. स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट, दैट No, शीट okay. जिसमें. हाँ, कब करेंगे सर? I actually planning to start today. यू सॉरी वो. I wanted to finish haloalkanes first. अच्छा, हार्ड वाले के आपका अभी तक हुआ नहीं है? So it's over yesterday. स्कूल में या फिर आपका? For both, sir. अच्छा, फॉर बोथ. Raise your hand once you're done.